Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss digestion in amoeba. So let's move to the whiteboard. So dear students, that is now digestion in amoeba. तो डाइजेशन का प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स सिंपल एनिमल से लेकर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स और एनिमल्स की तरफ मूव करते जाएंगे, अल्टीमेटली रीचिंग द ह्यूमन बींग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा बेसिक इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एज पर आवर सिलेबस. सो इट्स साइंटिफिक नेम यू मस्ट हैव टू memorize, that is amoeba proteus. We have to learn it as it is the scientific name. So amoeba proteus is a protozoan which eats small organisms and also particulate organic matter that comes in contact with the amoeba. So dear students, ये small animals like paramecium इस तरह के जो organisms होते हैं उनको ये ingest करता है. इसके अलावा जो बाकी shallow waters और fresh water जो होता है उसके अंदर मौजूद particulate organic matter होता है उसको भी ये ingest कर लेता है. Dear students, इसका जो प्रोसेस है डाइजेशन का और इंजेक्शन का, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह ताला ने बनाया है. ये यूनिसेलर, इट इज़ बेसिकली अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, बट here I am going to let you make understand by diagrams. So this is amoeba proteus. आपको पता है इसकी कोई खास रेगुलर शेप बॉडी नहीं होती. दैट इज द न्यूक्लियस एज इट इज अ यूकैरियोट. एंड हियर कम्स द फूड पार्टिकल, दैट इज द फूड पार्टिकल. जैसे ही फूड पार्टिकल डियर स्टूडेंट्स इसकी तरफ आता है, सो इट एक्सटेंड्स इट्स साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस. आपको याद आया होगा, चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था. So these cytoplasmic projections are called pseudopodia. याद रखना आपने dear students, pseudopodia. तो ये pseudopodia इसके अराउंड बनाना शुरू कर देता है. This is amoeba, that is the nucleus, and these are pseudopodia. Pseudo means false. हमने पहले भी ये बात की थी. Pseudo means false and podia means feet. False feet इनको कहा जाता है, organs of this organism. So that is why they are called as pseudopodia, means false feet. So pseudopodia इसके जो सराउंडिंग में ये शुरू कर देगा बनाना, and ultimately ये वो दोनों ऊपर वाली साइड से फ्यूज कर जाएंगे. The pseudopodia fuse ultimately like this and encircling the food particle. Encircling the food particle. Now this food particle has been made to enter inside the body by forming the food vacuole.
Now this has become, now this is the food vacuole. So dear students, अब ये food vacuole बन गया. Food vacuole, dear students, जैसे इसने capture कर लिया, now it is detached and it completely becomes the food vacuole. Now initially, चूंकि ये water के अंदर था, तो water के अंदर आया तो इसका size थोड़ा सा food vacuole का large है. Here, the size of the food vacuole is size large. Okay, I'm writing the size of this food vacuole. Now, after that, in the next step, there are many changes which are going through the food vacuole. ये food vacuole बहुत changes में जाएगा. इससे multiple कुछ changes आएंगे. वो किस तरह से? पहले ये food vacuole जो है, it becomes small. इसमें से water जो है वो remove होगा. It becomes small. Then again, the lysosomal enzymes they are added to the food vacuole. It again becomes large, and ultimately after digestion, the food vacuole again becomes small, and ultimately it is converted into fine canals. ये सारी बातें अभी आपको डिटेल से समझाता हूँ. तो यहाँ से the first step begins. So the first step, remember this point for MCQs. The first step in digestion is killing and softening of food. जो भी फूड इसने इंजेस्ट किया, फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप ये सारा कुछ क्या होगा, इसको उस ऑर्गेनिज्म को किल किया जाएगा और उसको सॉफ्ट किया जाएगा. एंड दिस इज डन इन एन एसिडिक मीडियम. ये सारा कुछ एसिडिक मीडियम में होगा. एंड द pH is for that very acidic medium is 5.6. 5.6 pH होती है जब ये फर्स्ट स्टेप यानी किलिंग और सॉफ्टनिंग ऑफ फूड हो रहा होता है. एंड अल्टीमेटली the medium becomes alkaline, and now the pH becomes 7.3 approximately. यहाँ तक चली जाती है alkaline medium में, in which the digestion is completed. Clear, dear students? So that was the first step. Now, initially, the food vacuole is large. Water is expelled from food vacuole and it becomes small. In the next step, so these are the changes in the food vacuole. You may make the heading changes in food vacuole. So that was the first change. Then what happens? Then
lysosomal enzymes are added to the food vacuole it becomes large again, means the food vacuole. जब lysosomal enzymes उसके अंदर ऐड किए जाएंगे अब वो दोबारा से उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा. Now in the third step, the food is digested and the food vacuole is converted into fine food canals. तो परेशान नहीं होना, अभी डायग्राम से भी आपको मज़ीद समझाऊंगा. लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट. सो अब जो फूड वैक्यूल जो कि इनिशियली बड़ा था उसमें से पानी को रिमूव किया गया. आफ्टर देन इट बिकम स्मॉल. अब उसके अंदर लाइजोसोम्स ऐड किए गए. उनके जो एंजाइम्स हैं उनकी वजह से जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ द फूड वैक्यूल अगेन बिकम लार्ज. जब डाइजेशन हो चुकी तो दोबारा से उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और अब जो फूड वैक्यूल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फाइन कैनाल्स और जो डाइजेस्टेड फूड है सिर्फ वही उन फाइन कैनाल्स के जरिए उसके पूरे साइटोप्लाज्म में जो है वो भेज दिया जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड मैटर था दैट इज गिवन आउट और दैट इज रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी बाय एक्सोसाइटोसिस. The digested food material is moved via means through, it's a short form for through, it is moved through the food canals and is processed to the cytoplasm where it is needed. And finally, dear students, the undigested food material is removed by exocytosis. Clear? Now I am going to explain with the help of the diagram which is given in our book. So here is the food particle that is moving inside, making the amoeba making pseudopodia and encircling him. Now it becomes the food vacuole. So the water is removed and the vacuole becomes small, as you can see. Now the lysosomal enzymes are added and it again becomes large. So these are the serial changes which are being processed. So these are the lysosomal enzymes. Lysosomes penetrating their enzymes, and now this is digested, and after digestion fine canals are made. These are the fine canals. Fine mean very small diameter containing canals. Canals means
the space and from here the food is ingested. So now I'm going to label it. This is a food particle or food material. It may be particulate matter, organic matter, or paramecium or small organisms. So digestion occurs at any surface. It is on the general surface. कहीं से भी किसी भी point के से भी वो जो ingestion का process हो सकता है. The first step. Then this becomes the food vacuole. This is food vacuole, and from here the water has been removed. Water is removed from food vacuole. It becomes small, and here lysosomes added to food vacuole, and these are the fine canals. And this is exocytosis of undigested or waste material, and these are the digested particles which are being transported through these food canals into the cytoplasm. So this one is the first step, that is ingestion. Then this is the second step, then is the third step, then this one is the fourth step, and this one is the fifth step. So this is how, my dear students, the digestion in amoeba proteus takes place. Dear students, this one is MCQ. Its scientific name is MCQ. Pseudopodia, that is MCQ. The initial pH in which the first step is being done, यानी कि killing और softening जिस step में हो रही है उस वक्त pH कितनी होती है? 5.6, that is MCQ. और जब वो alkaline हो जाती है तब कितनी होती है? That is 7.3. That is slightly alkaline in nature because 7 is neutral. And after that, what are the changes associated with the food vacuole? Initially जो food vacuole large होता है क्योंकि उसने वो सूडोपोडिया ने जब उसको दोनों साइड से फ्यूज़ किया तो उसके अंदर वाटर था. वाटर जब यहाँ से रिमूव होगा तो फूड वैक्यूल स्मॉल हो जाएगा. देन द लाइसोसोम्स आर एडेड. वो एंजाइम्स जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद उसके अंदर. दे स्टार्ट डाइजेशन, एंड आफ्टर डाइजेशन द फूड इज मूव्ड इनटू द फूड वैक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू फूड कैनाल्स थ्रू विच द फूड इज मूव्ड बाय द फूड कैनाल्स. सो दीज आर द basic steps, and this is the basic diagram which is representing the digestion in amoeba. So it is important regarding a long question as well. So dear students, आपने देखा कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त डाइजेस्टिव जो है वो प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है. वो एक पूरे प्रोसेसिंग के थ्रू जो फूड मटेरियल है वो उसको इंजेस्ट किया जाता है, दैन उसको डाइजेस्ट किया जाता है, दैन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड मैटर है उसको बॉडी से रिमूव भी कर दिया जाता है. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.